of Allah, the most beneficent, the most merciful. Women are leaders everywhere here. From the CEO who runs a Fortune 500 company to the housewife who raises her children and raises her household. It's my pleasure to welcome you all, Professor Dr. Nasra Khatun, Acting Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Nusrat Idris, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, University of Karachi, Keynote Speaker, Professor Dr. Iram Siddiqui, Director, Women Federation for World Peace, Canada, distinguished speakers, all the faculty members, and my dear students, Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا آمنت بالله صدق الله العظيم نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا نہ دیکھا شہکار ان جیسا کوئی لائے مثال کی جو شہکار ان جیسا رہی میں سا کری میں سا جو دیکھا ہو تو بدلا کیا ہو پیار ان جیسا کہ جس نے اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ زمانے بھر پہ چھا جاؤ زمانے بھر پہ چھا جاؤ جو ہو اظہار جیسا زمانے بھر پہ چھا جاؤ جو ہو اظہار ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا. Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Nasra Khatun, Keynote Speaker, and my dear friend, Professor Dr. Iram Siddiqui, Director, Women Federation for World Peace, Canada, national and international distinguished speakers, respected guests, and my respected faculties members, and the dear students. Assalamu alaikum. It gives me a great pleasure
to welcome you all here at the International Women's Day Conference 2022. Gender Equality for Sustainable Tomorrow, Celebrating Women's Role. This conference is a proof of the department's extensive efforts to provide a constructive platform for academic exchange. Scholars, researchers, and media practitioners, and my students of the Women's Studies will impart the valuable knowledge, express their opinions, and will surely share their views in the domain of Women's Studies. It is evident from the title of the conference that it aims to emphasize the need for the gender equality in order to eradicate or gender bias. Ladies and gentlemen, one reason we have been able to gather here today is because of the endless support offered by the Ministry of Labour Division, Human Rights and SASI, and especially Mr. Saeed Ali. I am thankful to them for making this event possible. It is my earnest hope that this collaboration between Karachi University and Sindh Ministry continues in the future, as well as enabling us to have more such wonderful opportunities. The role of women are playing in different fields and become the victims for gender violence. We need to shatter the myth the women are weak and cannot make any meaningful contribution in society. There are numerous examples for women who have proved that they can excel in different fields. All they need is the right platform at the right time. Ladies and gentlemen, I strongly believe that we should not confine the Women's Day to March 8 only. Every day provides a new opportunity to celebrate women's achievement, whether a woman is a career-oriented or a housewife. There are many sacrifices she makes which remain unacknowledged. Let's acknowledge the contribution of all women, irrespective of their fields. I congratulate Dr. Asma Manzoor, in charge of Women's Studies, the faculty members and the students of the Center of Excellence for Women's Studies for working day and night to organize this conference. This conference is a reminder to all of us that if we wish to create a sustainable tomorrow, we need to for a both gender equality. खासकर अपने उन स्पीकर्स की जो दूसरे शहरों से तशरीफ लाए और वो लोग जो आज हमारे साथ मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आज ऑनलाइन होंगे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको कुछ स्पीकर्स बुला के बच्चों सुनवाया जाए और उनको सुने, नहीं। आप देखें वुमेन एम्पावरमेंट की ये बेहतरीन मिसाल है। आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने क्लासरूम से शुरू कीजिए, आपके टीचर्स, उसके बाद ये सारे स्पीकर्स, ये ख़वातीन जो आज तशरीफ़ लाई हैं, ये एक ऐसा हमने आपके लिए बुके तश्कील दिया है। आप देखिए कि इनकी महक पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में मौजूद है। आपको देख के खुशी होगी कि ये ख़वातीन अपने घर में भी रोल प्ले करती हैं और अपनी जॉब्स में भी और माशरे के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और हम आपको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इन प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारी आज की सारी ये कोशिशें इसीलिए। आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी अभी आपको तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि हमारी वाइस चांसलर साहिबा को 2 प्रोग्राम्स और ज्वाइन करने हैं और एक लंबी मुसाफत भी रास्ते में तय करनी है, तो लिहाजा थोड़ी सी तब्दीली होगी, जिसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी माजरत ख्वाह हूँ, स्पेशली जो हमारी कीनोट स्पीकर हैं उनसे। और मैं उम्मीद करूँगी कि आज के दिन जब आप तमाम बच्चियाँ और बच्चे यहाँ से उठेंगे तो आज आप बहुत सारी चीज़ें सीख के उठेंगे और आप ये जानेंगे कि ख़वातीन इस माशरे के अंदर, चाहे वो उनका घर हो, चाहे उनका फैमिली हो, चाहे उनका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे उनकी जॉब्स की जगह हो, और माशरे में जहाँ उनको अब हिस्सा बनना है जाके, वो उसमें एक बेहतरीन रोल प्ले करेगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, our respectable dean. Annually celebrated on March 8, the day aims to highlight the achievements made by women across the globe. The day also ensures to create awareness among women in order for them to take their stand and fight against gender discrimination in society. Because every woman has a right to be empowered, to be valued, and to be respected. Today, women are excelling in every field, and we have yet another name of a person who does not need an introduction.
The first woman acting Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Nasra Khatun. She has also served herself at this university for 33 years. I would like to take this honor to call her at the rostrum for a presidential address. Please welcome her with a huge round of applause, everyone. Dean Faculty of Science, Social Sciences, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, the faculty members, the in charge Women Study Centers, and the students, and the distinguished guests. Assalamu alaikum. I'm really delighted to be over here, and I'm very much impressed with that of the theme of the conference. No doubt, according to my belief, that every day is the Women Day. Not a single day is a Women Day. We are always, every day we are tackling the challenges. Every day we are challenging all the things. We all are, if the males are not believing on this or not, we are always being empowered. Either we are at home or in job. At home, when some of the ladies are not doing their jobs, they are tackling all the problems of the domestic problems, all the other social problems. This is the empowerment of these ladies, because the males are members of the family, but they are not knowing what's going on in the house. What are the challenges into the house? The females are over there are working, and the working women, they are fighting on the two sides, at home and at job. So they are much more powerful than that of the others. Still, the human are moving on the moon, but as a Pakistan is the bilingual, multiple language, multiple ethical and multicultural society, still the women are intentionally or non-intentionally facing the different problems, but still these problems is very much challenging, and the females, the women are trying to for their identity over there, and still as I am over here, all the girls are over. I don't know, the males are not invited, or only the girls are over here, and it looks so good, because the empowerment is still decade back. If we are observing the Hazrat Khadija, Hazrat Zainab, Bibi Fatma, Hazrat Khala, they are continuously working with the males of that decade, and still the females are over here supporting their males. Either they are उनको believe करे या नहीं करे, they are continuously in the monetary way, in the challenge, in the facing the problems. They are always be supporting their males at home, at service, and so. So, according to my belief, only one day is not the Women Day. Every day, by means of the challenges, by means of the other things, is the Women Day. We are challenging every day. Is the challenging day. जब हम सुबह उठते तो हमें पता ही नहीं होता आज हमें क्या फेस कर रहे हैं. And still, we are facing all the things. No doubt, the things are going to be advanced. Most of the males is also going to be support us, but still we are facing the क्या कहना चाहिए? हाँ, challenge के अलावा क्या कहना? Hurdles कहना चाहिए कि हम still hurdles अभी भी face करते हैं. लेकिन बहरहाल बहुत पुराने ज़माने से और अब में ज़रा थोड़ी बेहतरी आ गई है. हर वो जगह जहाँ पे हम देखते थे कि सिर्फ मेल्स ही होते, बट ओवर हियर द फीमेल्स आर देयर. एनएडी यूनिवर्सिटी चले जाए तो वहाँ ऐसा लगता है कि सिर्फ पहले था कि सिर्फ मेल्स होते थे, लड़कियाँ ढूंढने से मिलती थी, अब लड़के ढूंढने से मिलते हैं. और जैसे इस पूरे ऑडिटोरियम में भी द गर्ल्स आर देयर, एंड आई रियली सल्यूट टू देम कि वो मेहनत कर रही हैं और ये कि यहाँ तक पहुँची और इंशाल्लाह ताला आगे भी पहुँचेंगी. और स्टिल मैं अगर देखूँ चारों तरफ तो स्टिल आई एम ऑब्जर्विंग दैट द फीमेल फैकल्टी मेम्बर्स आर एवरीवेयर देन टू द मेल्स. तो खैर चलो हम ये कह सकते हैं कि मेल्स टीचिंग में नहीं आना पसंद करते, बट हर वो जगह द पायलट, द आर्मी एंड सो मैनी such type of the fields, the females are over there. So today I salute to all these ladies who are facing all the challenges. Thank you very much for organizing this conference. Naturally,
conference opens the new horizons to work in the future and is the source of the instant learning there for the coming decades. And I appreciate the Dr. Asma for continuously organizing such a program, and now it's become a continuous feature of the Women Study Center for organizing this International Day of the Women, but every day is the Women Day. Thank you very much. Thank you very much, the Honorable Professor Dr. Nasra Khatun, for sharing some very important thoughts with us today. आज हमारे दरमियान मौजूद तमाम ख़वातीन विमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बाइख्तियार बनाया है और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज ये अपने तमाम फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं। Honorable Professor Dr. Nasra Khatun, Acting Vice Chancellor, University of Karachi. Respected Professor Dr. Nusrat Idris, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, University of Karachi. Our distinguished keynote speaker, Professor Dr. Iram Siddiqui, worthy faculty members and dear students, Assalamu alaikum. International Women's Day is celebrated each year on 8th March to confirm solidarity with women around the globe. This day is not only aimed at celebrating women's achievements, but also raising awareness of women's equality. International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating gender equality. International Women's Day Conference, organized by Center of Excellence for Women's Studies, is consistently one of the most dynamic, engaging and exciting events promoting women's empowerment. The title of the conference for the year 2022 is Gender Equality for a Sustainable Tomorrow, Celebrating Women's Role. The aim of this conference is to bring together leading national and international researchers to share and exchange their experiences and research findings on different aspects of gender equality for sustainable development. This forum also provides an interdisciplinary platform for policymakers, researchers, and educators to present and discuss the most recent developments, trends, and concerns in gender equality and women's role. Women in Pakistan make up almost 48.54% of its population, hence role of women in Pakistan's social economic development cannot be undermined. Women of Pakistan have proved their mettle in all spheres of life and are acknowledged as a vital element of national prosperity. Owing to the magnitude of their contribution in all major areas of national growth, I am convinced that a sustainable future without gender equality is simply unthinkable. The purpose of this conference is to provide sustainable development on the basis of gender equality. This is in congruence with the overall mission of the Center of Excellence for Women's Studies. It is a hope that through this year's conference at Karachi University will become a place where academics and researchers from all over the world regularly meet to discuss the development of their disciplines and present their work. This conference seeks to achieve the following objectives: to highlight women's economic and political challenges, cultural diversity and women's human rights, to update about gender discrimination and its impact, role of women in promotion of peace, population trends and public policy, to examine social media and its impact on women. The Center of Excellence for Women's Studies at the University of Karachi has always been involved in addressing causes and concerns which not only benefit the faculty and students of their own institute, but also provide an institutional mechanism to resolving the emerging problems and challenges in our globalized world. Conference theme for the year 2022 highlights the importance of challenging biases and removing misconceptions in order to create a more inclusive and bias-free world, while acknowledging the importance of the role of women in sustainable development. Thank you. Siddiqui, Director, Women Federation for World Peace, Canada.
who has joined us online for today's event. Professor Dr. Iram Siddiqui has more than 20 years of experience in teaching and research. And as the Director of Women Federation for World Peace Canada, she explores new opportunities for women of different cultural and religious backgrounds. Professor Dr. Iram Siddiqui is an alumna of University of Karachi. She has done her Masters from the Department of Political Science, and her presence at this event is an honor for us. I would like to take her in for a keynote address on the topic Cultural Diversity and Women Human Rights. Everyone, please welcome her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected guests, Honorable Acting Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Nasra Khatun, Session Coordinator Sharmeel Ismail, Professor Dr. Nusrat Idris, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, University of Karachi, Conference Coordinator Dr. Asma Manzoor, Dr. Alaya Ali for Center of Excellence for Women Studies, University of Karachi. Together with everyone, I join in welcoming all of you and human rights, in particular cultural rights. Firstly, it addresses general human rights issues such as universality and cultural relativism and the principles of equality and non-discrimination. Secondly, it explores the scope of cultural rights as well as the cultural dimension of human rights. Thirdly, several cases are discussed in which human rights were invoked to protect cultural interest, confirming the values of cultural diversity. It is very important to understand that which areas require attention in order to further improve the promotion and protection of human rights and women in relation. Dr. Salim Rosato, a leading expert in multicultural diversity as a system of beliefs and behavior that recognizes and respects the presence of all diverse groups in an organization or society. Acknowledges and values their social cultural differences and enables their continued contribution within an inclusive cultural context which empowers all within the organization or society. Essentially, cultural diversity is about bringing people together from a diverse set of backgrounds and cultures, then creating an environment that not only recognizes the difference between those cultures and backgrounds, but celebrates them. It helps create a safe space for people to be authentically themselves. For example, Canada, where I live, experience various scenarios and interact with various cultures on a daily basis. I believe Canada is a country of great diversity and unique standards for women and human rights. Therefore, a violation of human rights is not possible, and injustice towards gender is not prevalent in this society. The society is very team-oriented, and women values, beliefs, and social concerns are addressed, acknowledged, and respected in all spheres of activities. The world is naturally multicultural, and cultural diversity includes race, ethnicity, sexual orientation, religion, language, gender, age, and disability. A cultural and often religious practice that is still extremely prevalent in a number of countries. Islam has an extensive tradition of protecting the civil liberties of women based on the guidelines set forth by Allah, the God Almighty, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For the harmony of a balanced society, Islam has designated special roles to both the genders, which creates harmony in the society. In the West, the concept of women empowerment contributes and creates contradictions in family developments
which affect the individuality of future generations, creating very egoistic and self-centered society. However, in the Muslim world, especially in Pakistan, the rights given to the women are not implemented in the letter respect. Therefore, creating the contradictions which burdens women to a great extent in turn is blamed on culture. Violence against women and girls, discrimination in acquiring education, sexual harassment, forced marriages, etc., are very common in various cultures, including Pakistan. Violence causes more death and disability, and violence it covers both physical and mental worldwide amongst women aged between 15 to 44 years, then war, traffic accidents, malaria, and cancer, which is according to the World Bank study case report recently published. And globally, 10 million more girls are out of school than boys. That is also according to the UNICEF current case studies. Many killers are often celebrated in their communities as they are perceived as having defended the honor of their family name. Although there is the availability of enforcing legal measures now to punish them accordingly, most killers go unpunished. It is a dire need of the time to prosecute those guilty of honor killings and provide justice to rape victims effectively and in real time frame, as justice delayed is justice denied. Cultural diversity can take steps in professional settings within educational institutions and overall in most aspects of life. What other countries can learn from Bangladesh about closing its gender gap, as it has recently reducing its gender gap in the recent past. Bangladesh has secured the 65th position in the overall political empowerment, labor force, and literacy rate. For example, women in parliament, women in ministerial positions, and female head of the states in the past 50 years. All of the South Asian countries have ranks beyond 100. Many of our gender stereotypes are strong because we emphasize gender so much in culture, and their role are determined by the dominant cultural norms. Cross-cultural studies and comparative analysis reveals that culture overall can be understood as a way of living or being. When you go out into the world, you will come into contact with people from different backgrounds and walks of life. It's a good rule of thumb to honor cultural diversity with your actions and attitudes. In the end, I would like to give my due respect to so many immensely talented women working both at home and abroad to make the country and the world a better place. We should all be a verbal campaigner and ambassadors of women and human rights. In the end, I would like to wish all of you a very successful, interesting, great academic year ahead. Thank you so much for the invite. Thank you for joining us, Professor Dr. Iram Siddiqui, and giving us your precious time. Among us today there is a prominent figure, Professor Masroor Qureshi, former professor, Federal Urdu University. आज इस हाल में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा की और ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा ख़वातीन की पावरफुल होने का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया अमेरिका से और डॉक्टर नुसरत इदरीस ने एक धमकी आमेज पैगाम भेजा कि फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी आइए और इस कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ कवर कीजिए बल्कि कुछ बातें भी की। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ख़वातीन का जो आलमी दिन है इस मौके पर कराची यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ह्यूमन स्टडीज़ में अपना काम कर रही है और इसी बुनियाद पर वो माशरे से अपने हुकूक़ की बात करती हैं। मेरे ख्याल में उनकी इस बात की हिमायत न करना हिमाकत के आला दर्जे पर फाइल होने के बराबर होगा।
इसलिए मेरी तरफ से पूरी हिमायत है। आज़ादी और हुकूक ख़वातीन जो मिलने चाहिए उनको और मिलकर रहेंगे। असल सवाल यहाँ पैदा होता है कि इन हुकूक और मौजूदा दौर में औरत की तलाश ज़ात से इज़हार ज़ात तक की नई जहत ने फरसुदा निज़ाम में एक तहलका मचा रखा है। मशरक़ व मग़रिब में औरत के हुकूक की आज़ादी के अलग अलग म्यार हैं। मैं अभी ताज़ा 2 दिन पहले मग़रिब से आया हूँ, तो मुझे इन तमाम हुकूक का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर मालूम है और यहाँ पर भी उन हदूद का अंदाज़ा है। क्योंकि मग़रिब में औरत के हुकूक के मेयारात मशरिक़ बिलखुसूस बरसग़ीर की औरत से जुदा हैं, मगर वो वक्त आता जा रहा है और फ़ातिमा हसन के शेर की ताबीर से के मुताबिक होगा कि आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। थैंक यू। As Role 2022 happened. We are also grateful to all the sponsoring organizations and institutions. I would like to thank Professor Dr. Nasra Khatoon, Acting Vice Chancellor, University of Karachi, for kind support, and a special thanks to our Dean, Professor Dr. Nusrat Idris, for immense cooperation and encouragement. I would like to thank Honorable Mr. Saeed Ghani, Minister, Labour, Information and Human Resource Department, Government of Sindh, for financial support. We are also thankful to the Sindh Employees Social Security Institution, SASI, for their partnership. I am also thankful to Diwan Group of Companies and Auric University of Karachi for financial support. I am running short of words to express my humble thanks to Professor Dr. Iram Siddiqui, our keynote speaker, all paper presenters, Dr. Heather Latton, Honorable Mehtab Akbar Rashdi, Professor Dr. Rifat Haq, Professor Dr. Alfa Sayyida Zahra, Dr. Huma Bakai, Professor Dr. Anila Ambar Malik, and all papers presenters from different institutions. I special thanks to Professor Masroor Qureshi, CEO, Jazba Post Chicago, online newspaper, who is joined us from Chicago for media coverage. I am thankful to Mr. Ashfaq Khanzada for technical support. During the conference, we have conducted a variety of events, presented research papers nationally and internationally. I would like to thank the convener of the conference, Dr. Asma Manzoor, for making this conference a great success, and our teaching and non-teaching faculty of the center. I would like to thank the volunteers who have been running around doing a lot of things. Thank you so much. Clap for yourself. यहाँ पे थोड़ा सा मैं उर्दू में बात करना चाहूँगी। लिखा तो इंग्लिश में था। स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय वंडरफुल स्टूडेंट्स। आपके बगैर इस कॉन्फ्रेंस को, आपकी सपोर्ट के बगैर इस कॉन्फ्रेंस को, तालियां थोड़ी खुद बजा लें। आप लोग बता रहे हो, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर, आप लोगों के कोऑपरेशन के बगैर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना यकीनन मुमकिन नहीं था। एट लास्ट स्टूडेंट्स, our war concepts are based on male experiences and considered those as representative of all human beings. In war, women's sufferings remain invisible. The research shows that violence against women continues and even increased after men return from the battlefield. History of wars and conflicts is full of atrocities, varied type of violence committed against women, whether we talk of World War I, World War II, what happened in Bosnia, what happened in Rwanda in 19 and Herzegovina, Palestine, Kashmir, Afghanistan, Liberia, and Democratic Republic of Congo, and list goes on. Normatively and empirically, thinking about war without gender is incomplete. There is gender blind understanding. Isko move karte jaiye, please. I am at fifth slide. Yeah. Normatively and empirically, thinking about war without gender is incomplete. There is gender-blind understanding of conflict and war. Male soldiers, gender roles, they are fathers, they are sons, they are brothers. It does affect the men, the women as well, who are the wives and mothers and sisters. We ignore grieving
mothers and women. Family structures are broken in these situations. And when we look at the structural inequalities, many parts of the world continue to experience armed conflict. In such situations, entire community, directly and indirectly, is involved in conflict, are affected. The impact on the women is very complex. It is reported 85% of women civilians are victims of present-day conflict. Forced migration have shown 80% of refugees and internally displaced people are women such as in Syria, from Afghanistan, Iraq, IDPs from Savar, and now from Ukraine. Women's vulnerabilities and risk to different forms of violence are multiplied, and their daily lives are a constant struggle and test of physical and psychological suffering. Increased militarization in third world, and again I want to mention, now in the first world, in Ukraine, countries further limit the rights of women, especially gender equality is compromised when at international level the military intervention is justified into sovereign nations such as American invasion of Afghanistan, what they did in Vietnam, what they did in Iraq, how these so-called hegemonic countries influenced Iraq and Syria and Indian atrocities in occupied Kashmir. How can we forget that? So world over, the women's struggle has borne fruit regarding women's rights and gender equality. This is an evolving process from many aspects, and we have come a long way in recognizing women's role, and venues are opening up for women to contribute in social order. Gender equality is necessary for the security and stability of our country. Inclusion of both gender is greater relevance for society because it makes policies to respond more effectively to the needs of the society. Here comes a very important instrument of United Nations Security Council, which is called Resolution 1325. It was adopted anonymously by UN Secretary Council on 31st October. The resolution acknowledged the disproportionate and unique impact of armed conflict on women and girls. So like 20 years have passed. So this resolution recognized the unique impact of conflict on women's lives and highlights their often overlooked contributions to resolving and preventing conflict. It also calls on the international community to involve women fully in every aspect of our work for peace and security. And 64 countries in the world have adopted this resolution by having national action plans. They are making laws, they have NGOs, they are spending money on it and whatnot. And there are many, many success stories. Women are underrepresented in peace processes, disarmament and non-proliferation. Gender mainstreaming is necessary to integrate women in field-based operations, especially in law enforcement agencies, police and army, advisors, gender experts, focal persons, peacekeepers, observers, human rights and humanitarian personnel. They should be given positions to play active role in drafting and to implement relevant and effective strategies for prevention of extremism and post-conflict. For example, in Rwanda and Colombia, there are many more countries, women have played an extremely effective role. In post-conflict environment, we know women are head of households, which provides them influence in whole family and its transition to peaceful life. Mothers are the key caregivers. So can be effective in reaching out to the marginalized and traumatized people, children, youth, elderly. Mothers have played a crucial role in Africa, Middle East, Rwanda. There are like 9-10 women who got a Nobel Peace Prize. In total, in the world, since the Nobel Peace Prize has been given, 57 women have got it who have excelled in literature, as scientists, in chemistry, in physics. But
प्लांट्स लगाए, पौधे लगाए, दरख्त लगाए और अपने मुल्क को डेवलप मुल्क करते हैं। उन्होंने लाइबेरिया में हुकूमत भी की है फाइनली। Another woman from Liberia, who never lived in Singapore. आगे कीजिए बेटा. And she is from Yemen, Tawakkul, and we need so many Tawakkuls in Yemen because still so many atrocities are being done. And there are Malala Yousafzai. Thank you very much. There is some technical problem, so we are moving towards the plenary free speaker. Respected Madam Mehta Badrati, Member Standing Committee on Primary Institution. And the topic is Women Economic and Political Change. रोशनी होगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। Lights on कर दे please. Bismillahirrahmanirrahim. My topic is women, economic and political changes. I congratulate Dr. Nusrat Idris, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, for convening this very important conference on 8th March. Please, बहुत शुक्रिया। नहीं मैं तुम्हें बोल मेरे दिल की बात। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Dada Saab, could you please take the seat for that? Please, madam, continue. उन्होंने कहा मैं उर्दू में बोलूँगी तो मैं क्यों नहीं बोलूँ? आपकी उर्दू इंग्लिश दोनों क्या पता है? Thank you. बहुत मुबारकबाद। आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई है उस दिन पर जो 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। और वो किस लिए मनाया जाता है? वो इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस हर उस टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाती है लोगों को जिसमें हम समझते हैं कि लोग भूले हुए हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, इसकी ज़रूरत है। तो आप ये देखिए कि अब तो रोज़ाना कोई ना कोई दिन बन रहा होता है, लेकिन दिस डे व्हाट यूनाइटेड नेशंस हैज़ एक्चुअली डेडिकेटेड टू women of the world, 8th of March, and the whole auditorium is full of young women, very few people, men, जो आधे तो बेचारे ड्यूटी के इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आए हुए हैं, दूसरे शायद किसी मजबूरी के तहत बैठे हुए हैं। लेकिन इफ़ यू आस्क मी, these sessions should be listened by men. मर्दों के सुनने की बातें हैं। हम औरतें तो उससे गुजर भी रहे होते हैं, हमें पता भी होता है हमारे मसले मसाइल क्या हैं, लेकिन जो मसले मसाइल पैदा करने वाले लोग हैं वो गायब हों तो आपका मसला और बढ़ जाता है। But one thing to understand कि औरत को जो सपोर्ट मिलती है वो भी घर से मिलती है, उसके बाप से मिलती है, उसके भाई से मिलती है, उसके शौहर से मिलती है। So we need to celebrate them as well, whoever is sitting over here, just with the support of their fathers, brothers, husbands, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। And as I said, is the women economic and political challenges. बात ये है कि औरत को चैलेंजेस कहाँ नहीं है, हर तरह से उसके चैलेंजेस है। उसका पैदा होना एक चैलेंज है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती,
अरे फिर लड़की पैदा हो गई, एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मेरे अपने घर में मैं अपनी बहनों में चौथा नंबर थी, तो जब मेरी पहली बहन पैदा हुई होगी तो मेरे ख्याल में सबके मुंह बन गए होंगे। फिर दूसरी पैदा हो गई इत्तेफाक से, फिर तीसरी भी हो गई और फिर चौथी भी हो गई। तो मेरी नानी अम्मा ने मेरे बाबा से कहा कि बेटा, मेरी बेटी से तुम्हें बेटा नहीं होगा, तुम दूसरी शादी कर लो। Now this was the mindset, and my father said, no worry, if I don't have a son, I don't care. ये सब मेरी बच्चियां जो हैं मेरे लिए बहुत काफी। And the first step he took, that is a very small village like Naudero, where I was born, close to district Latkana, and no कोई रिवाज नहीं लड़कियों को स्कूल भेजने का। मेरे बाबा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजा। तो ज़लज़ला आया गांव में, ओहो उस्ताद साहब साई ने, वो मेरे माय फादर वाज अ टीचर, उस्ताद साई ने लड़की को स्कूल भेज दिया। परेशान हो गए मेरे ख्याल है जो रिश्तेदार होंगे सब, बट ही डिडंट केयर and the whole thing started. That was the first step that he took, and when I became big enough to go to school, मेरे रास्ते के सारे कांटे चुन लिए गए थे, मेरे लिए रास्ता साफ था। The important thing that my father did, that he moved from small village to Hyderabad, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि लाड़काना में उस वक्त तक लड़कियों के हायर स्कूल्स नहीं थे, हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो ही मूव्ड टू हैदराबाद, जहाँ पर स्कूल्स भी थे, यूनिवर्सिटीज़ भी थी, सब कुछ था। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। आई हैड experienced a lot in my career, right from being the school teacher at St. Mary's Convent High School, Hyderabad, then moving on to Sindh University as lecturer in international relations, and then moving on to get the Fulbright scholarship, went to the United States, came back, and I became the first chairperson of my department. I became the first director of the Institute of Synthology, and I run it with most of my capabilities. I still remember there. I became the first woman secretary in the history of Sindh Secretariat to become the secretary of the departments. So, you know, the struggle is not easy. It is a continuous struggle, but I covered this with the help of my family members, my sisters, my father, my brother, and of course my husband. So till you get all the support from your family, तो उसमें आपका रास्ता, आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं. But when we are generally talking about women's struggle in society, all over the world, women have been struggling to tell the world that they exist as human beings along with you, dear men. We also exist. Why 8th March? Because it was realized that all over the world, in different societies, women are being victimized, being discriminated in every walk of life. So the 8th March is become symbolic. That symbolic कि अब जब औरतें इसको बनाना शुरू करती हैं पाकिस्तान में, तो उनका मार्च करना भी एक बड़ा इशू बन जाता है कि औरतें मार्च करें कि ना करें. तो you can still see that we are still struggling. Just to put your own आपका अपना जो नुक्ता नज़र है उसको सामने लाने के लिए भी आपको जिद्दोजहद करना पड़ती है. So coming on the topic कि challenges क्या हैं हमारे पास, economic challenges क्या हैं and political challenges क्या हैं. Economic challenges औरत के लिए सबसे बड़ा इशू है कि आप ये देख लीजिए कि जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती and you are not independent, आपके अंदर वो confidence नहीं आता, आपको वो empowerment नहीं मिलती,
جو آپ کو سوسائٹی میں ایک مقام دلانے میں مدد کرتی ہے. No matter you are an educated woman or you are not an educated woman, to be empowered is something which comes from here, but the society has the way to open the doors for you, make the environment so friendly that you feel confident, you move on, you earn your own money, and when a woman earns a money, she doesn't spend on herself only. The basic thing is she spends it on the family. اگر شادی شدہ ہے تو بچوں کے لیے, اگر غیر شادی شدہ ہے تو گھر کے لیے, ماں باپ کے لیے وہ اپنا پیسہ اسپینڈ کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ she is actually supporting the family by being a very cautious person in the society. لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. آپ صبح دیکھتی ہیں, صبح 6 بجے 7 بجے کراچی میں آپ نکلتے ہیں, جب ہم سے بھی پہلے بہت ساری خواتین نکل رہی ہیں گھروں سے, بسوں میں سے. کوئی کسی کو اس کا میاں سائیکل پہ لے کے آتا ہے, موٹر سائیکل پہ گھروں میں چھوڑتے جاتے ہیں ان کو. وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں صبح جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, ان خواتین کے گھروں میں جو دوسرے اپنے کام سے آفیسز میں جاتی ہیں. تو when you are talking of the support in economy, تو who is supporting the society in economy? وہ عورت کیوں نکل رہی ہے گھر سے؟ اگر سارے مردوں کو اتنی غیرت ہے کہ نہیں 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 ہماری عورتیں کام نہیں کرتی, تو بٹھائیں ان کو گھر پہ اور گھر چلا کے دکھائیں. مشکل ہے, زندگی مشکل ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ نہیں ہماری لڑکی کام نہیں کرے گی, وہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جن کے پاس فالس ایگوز ہیں, جو ریالٹیز کو نہیں سمجھتے, جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری اکانومی چلتی ہی عورت کے دم سے ہے. جب تک وہ یہ ریئلائز نہیں کریں گے, آپ کی اکانومی نہ فلرش کر سکتی ہے, نہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے عورت کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ کسی اور کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں, وہ آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں, آپ کے سسٹم کا حصہ ہے, اور آپ کی سوسائٹی ان کو بہت نیرو اسٹیم سے دیکھ رہی ہوتی ہے, اور عورت کے لیے باہر نکل کے کام کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز جو آپ کو سوچنے والی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ سگنیٹری ہے, وہ بہت سارے MOUs پہ سائن کر لیتا ہے, بہت ساری چیزوں کو کہتا ہے جی 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 ہم بھی اس میں شامل ہیں. وہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ when you are member of the international forums you have to go along with the world. اگر آپ نہیں جائیں گے تو دوسرا کہتا ہے کہ بھئی you are not the member, ہم ڈونرز نہیں بھیجیں گے, آپ کو یہ ایڈ نہیں ملے گا, آپ کو فلاں چیز نہیں ملے گی, تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن دل سے وہ قبول نہیں کر رہے. تو as long as many other MOUs which have they've signed, like 8th مارچ بھی انہوں نے سائن کیا ہوا ہے, ہم مناتے بھی ہیں 8th مارچ, لیکن 8th مارچ کے فلسفے کو ہماری حکومت کتنا سمجھ رہی ہے وہ ابھی تک نہیں سمجھی. اگر یہ سر اب بچ چکے ہوں اور آپ تک میری یہ آواز پہنچ گئی ہو تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ جتنی کام کی باتیں تھیں وہ مجھ سے پہلے میری دوست مہتاب راشدی کر چکی, اور جس قدر بیکار باتیں ہیں وہ میں کرنا چاہوں گی. میں واقعتاً اس بات کو دل سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت میرے لیے گنجائش پیدا کی, اور جب کبھی بھی میں بہت سوچتی ہوں کہ اپنی انگریزی کی دھاک بٹھاؤں گی تو مجھ سے اردو میں بولنے کی فرمائش کی جاتی ہے. اردو ویسے بھی میرا عشق ہے, کبھی میرے دل سے دور نہیں ہوں. جو موضوع میں نے اپنے لیے چنا خود وہ یہ تھا کہ جب معاشروں میں صنفی امتیاز ہوتا ہے
امتیاز بھی میں بہت تمیز سے کہہ رہی ہوں، بلکہ اس کو نفرت، تفریق اور جہالت کہنا چاہیے. تو انجام وہی ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کوئی اپنے حق کی بجائے رعایت مانگنے لگتا ہے اور جب کبھی بھی آواز اونچی کرنے لگتا ہے تو اس کی بات بڑی حد تک بے وزن ہو جاتی ہے. بہت لطف کی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ہم نصف آبادی ہیں، لیکن ہم وہ مجہول افراد کی آبادی ہیں. ہم کوئی عمل نہیں کرتے، ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک کام ہم سے سمجھا جاتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ ہم سب سے اچھا کریں گے، وہ ہے حکم کو بجا لانا. تو حضور حکم تو ہم زندگی کا بجا لاتے ہیں اور حکم ہم زندگی دینے والے کا بجا لاتے ہیں. حکم ہم ان کا بھی بجا لاتے ہیں جو زندگی کا احترام کرتے ہیں اور زندہ رہنے والوں کا احترام کرتے ہیں. جو کوئی کسی زندہ فرد سے انکار کرتا ہے وہ خدا کے انصاف سے انکار کر رہا ہے. میرا خدا غیر منصف نہیں ہے اور نہ میرے خدا نے میرے اعمال کی ذمہ داری کسی اور کو سونپی. اس کی میزان عدل برابر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً ساری دنیا میں ایک ہم اکیلے نہیں ہیں. عورتوں کے حقوق سے انصاف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جو خود انصاف کے طالب ہیں وہ ہمیں انصاف بھیک میں دیتے ہیں اور یہ ایک انتہائی شخصی، انتہائی محدود اور بڑی حد تک مسخ تصور ہے انسانیت کا ایک ہونے کا. اردو میں بولتے ہوئے لطف یہ بھی آتا ہے کہ زبان میں غیر سے یہ شرع آرزو ہو نہیں سکتی. اس شرع آرزو میں بہت معمولی بات سے شروع کروں گی کہ 8 مارچ ہمارا دن مقرر کیا گیا. کیا اچھی تاریخ ڈھونڈی ہے. 8 لکھنے کے لیے 2 دائرے ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے ہیں اور اگر ان دائروں کو الگ کر دیا جائے تو 0 باقی رہ جاتا ہے. اور اسی صورت سے اگر اردو میں یہ 8 لکھا جائے تو انتہائی متوازن 60 درجے کے زاویے پر 2 حصے ملتے ہیں. ایک حصے کو ہٹا دیجئے، دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا. عورتیں نہ ادھوری زندگی چاہتی ہیں نہ مجروح زندگی چاہتی ہیں. ان کو کوئی شکایت مردوں سے نہیں. وہ برابر کی تخلیق ہیں، برابر کی مخلوق ہیں، زندگی کی میزان قائم کرنے کے لیے موجود ہیں. لیکن اختیار کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ میزان کو نہیں مانتا. اختیار کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مہذب شیشے سے دیکھو. ہم بونے بھی ہوں گے تو دیو نظر آئیں گے. جنہیں دیو نظر آنے کا شوق ہے میری ان سے گزارش ہے، وہ چاہے خواتین ہے یا صاحب، میری صاحب معاف کر دیجیے گا، ایک بار ذرا سا گردن جھکا کے اپنی تصویر اپنے اندر دیکھ. بےحد اچھا مصور پروردگار نے ہمارے اندر رکھا ہے اور اس کا نام ضمیر ہے. لیکن بات کر سکتی ہوں، میں سیاست پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن اگر آپ میرے خلاف اس لیے ہیں کہ میں عورت ہوں تو میں اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ اپنی ولنریبلٹی کا بھی اظہار کرتی ہوں اور بہت جگہ پہ. I was a woman seemed to drive and so that was the biggest challenge. The political legacy and the relentless effort of Benazir Bhutto in the political and the social scenario. She appreciated the hardship of Benazir Bhutto with reference to the socio
political reforms. Thank you very much, everyone. Now the House is open for the question-answer session. If you have any questions, please do ask. बात हो रही है, उन्होंने सही कहा, ये उनकी मदरलैंड समझ रहे हैं आप, इससे इनका ओरिजिन यहीं से है। हमने बहुत सारा वक्त गुजारा है, बहुत सारा डिस्कशंस करके, चीज़ें सीख के, और हम शायद आज इस मंजिल पे इसी तरह पहुँचे। मैंने अपनी इब्तिदा में मैडम अपने बच्चों से ये कहा था, मैंने अपनी स्पीच में कहा था, मैंने आज आपके लिए एक बुके बनाया है। बच्चे शायद समझे नहीं थे, लेकिन अब शायद मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आज मैंने वाकई उनके लिए एक बुके बनाया था या नहीं। और एक ऐसा बुके था जिसमें मैंने मुख्तलिफ रंगों के फ्लावर्स उनके लिए जमा किए थे। मैं चाहती थी कि आज वो हकीकी मायनों में ये सीखें कि वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह होता है, औरत अपना मुकाम माशरे में किस तरह बनाती है, और किस तरह हम खड़े होते हैं अपने हक के लिए, हम चीज़ों के लिए। और जो मैडम एक बात कही थी कि अगर लोग सिर्फ औरत का मतलब जिस्म है, तो ये उनकी अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। मेरे ख्याल में औरत का मतलब एक अक्ल है, एक दानिशमंदी है, एक ख़ानदान उम्मे को कैदर करने का नाम है, वो फेथ भी है, वो यूनिटी भी है, वो डिसिप्लिन भी है। तो मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि जो भी सवाल हो, जिस तरह की भी सवाल हो, आप ये ना सोचें कि मैडम क्या सोचेंगी, इतने बड़े इल्मी लोग हमारे सामने हैं, बल्कि आप उनसे पूछिए, वो आपको आज गाइड करेंगे। बिल्कुल फ्रेंकली बच्चों से हाउस ओपन है, आप सवालात कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपका सवाल किससे है? मैम, आप सबसे मेरा सवाल है, ये सिर्फ एक छोटी सी शायद राय चाहती हूँ इस बारे में, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम यहाँ पर 8 मार्च को रिप्रेजेंट करें एज अ विमेन डे। क्या विमेन को एम्पावर करने वाला एक मर्द नहीं है? क्या वो मर्द उसका बाप नहीं है? क्या वो एम्पावरमेंट देने वाला उसका भाई नहीं है? या वो एम्पावरमेंट देने वाला उसका शौहर नहीं है? देखिए, जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हर चीज़ से इत्तेफाक है। ख़वातीन की आज़ादी से लेकर ख़वातीन के हर काम तक जाने में इत्तेफाक है, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द के रोल को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। आप ख़वातीन को सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन मेल्स को ट्रिब्यूट भी देना ना भूलें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक औरत के लिए। 2 मिनट की बात है बेटा, सवाल मुख्तसर करेंगे आप। जी मैडम, मेरा भी यही था। मुझे ऐसा लगता है आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी गौर से। जी, सबसे पहले तो मैंने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया, अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया, फिर मैंने अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया, और ये कहा कि अगर मेरे घर से मुझे ये तहफ़्फ़ुज़, इत्मीनान और एतमाद न मिलता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी। इसलिए आप न डिनाई कीजिए कि हम उनके चीज़ को नहीं मानते। हम उन मर्दों की बात कर रहे हैं जो औरत की सलाहियत को नहीं पहचानते। हम उन मर्दों की बात कर रहे हैं जो हमारे जो हुकूक हमें मजहब ने दिए हैं उनको भी डिनाई करते हैं। समझ गए आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा की शादी हो रही थी तो वो गए उनके पास, और आपने फरमाया कि फातिमा, तुम्हें पता है कि मुझे अली कितने प्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये हक देता हूँ कि तुम अपनी राय का इजहार करो। आज हमारे कितने बाप हैं जो आके बेटियों से पूछते हैं कि तुम्हें, वो कहती है कि मुझे ये शादी नहीं मंजूर, मुझे ये शादी मंजूर है, तो मार दिया जाता है। तो मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूँ आज के माशरे में। आप भूल जाइए, आप सब भूल गए हैं मजहब ने आपको क्या हुकूक दिए हैं, आपके कवानीन में क्या हुकूक हैं, लेकिन जो माशरा है जब वो उनको नहीं मानता तो औरत इसी तरह से ही वो स्ट्रगल करती रहेगी, अपने हुकूक के लिए बात करती रहेगी, और जब वो कर रही है तो कवानीन बन रहे हैं, जो कवानीन बनते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनको एम्पावरमेंट नहीं मिल रही है। तो ये नहीं कहें कि हमें नहीं मालूम कि मर्द ने हमारे उसका साथ ना हो तो आप नहीं चल सकती हैं। आज घर से जो आप निकली हैं तो पता नहीं किससे किससे पूछा होगा, उसने कहा होगा ना कि जाओ बेटी जाओ, कहा होगा ना। तो हम ऐसे थोड़ी आए हैं, हमें भी अपने बाप ने ये इत्मीनान दिया तो हम आए, इसलिए हम कभी नहीं भूल सकते।
جی ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گی. دیکھیے جو پیٹریارکی ہوتی ہے نا, جو عورت کا استحصال ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ معاشرہ ہے. ہماری بہت ساری عورتیں بھی عورتوں کا استحصال کرتی ہیں اور بہت سارے مرد عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ عورت مرد کی جنگ نہیں ہے, یہ پیٹریارکل سوسائٹی کو ریورس کرنے کی بات ہے. وہ ایک لیڈر کی بیٹی تھی اس لیے وہ لیڈر بنی. کیا ایک مڈل کلاس کی وومن وہ لیڈر بن سکتی ہے یا نہیں پاکستان میں؟ کیوں نہیں بنی؟ آپ کی تمام خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں, آج جو ایک عورت وائس چانسلر بنی ہے, وہ لیڈر نہیں ہے؟ جو آج یہاں آپ کی جو ڈین بیٹھی ہوئی ہیں, وہ لیڈ نہیں کر رہی ہیں؟ میم پالیٹکس. لیکن جہاں آپ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, وہاں پھر آپ کی طرف میں اشارہ کروں گی کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عورت کی اس چیز کو مان نہیں رہا ہے. میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ خواتین جو پولیٹیکل سسٹم میں آتی ہیں, ان کو ان کی پارٹیاں جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیتی ہیں. آپ ریزرو سیٹ پر تو آ جائیں, اور ریزرو سیٹ پر بھی وہاں ان کا ٹیلنٹ یا وہ نہیں ہوتا, یہ فلاں کی بیٹی ہے, یہ فلاں کی بہو ہے, اس کو خوش کرنا ہے. اس کا اصل جو خصوصیات یا اس کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں مانی جاتی. اس لیے یہ کہنا کہ عورت لیڈر نہیں بن سکتی, وہ لیڈر بن سکتی ہے, بشرط یہ کہ آپ کی سوسائٹی اس کو وہ جگہ دے اور مانے. بہت باصلاحیت عورتیں ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں. اور کاؤنسلر اور ناظم بنی, اور اس وقت جو پارلیمنٹ کا جو اسٹڈی ہے وہ ایک بتاتی ہے کہ جو میجورٹی قانون ہے اس کے پیچھے عورت ہے. اینڈ دے اٹینڈ دی اسمبلیز ریگولرلی اینڈ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ آر ایشوز, not really the big people's issue. So it's very important that women are playing a great role. اور آپ جو ساری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, you are taking that lead inshallah. سوال بھی نہیں ہے, بس یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے سالو کریں. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈسکرمنیشن ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال, میں آرگنائزیشن کا نام نہیں لوں گی, کہ اب آپ کی جو کامیاب خواتین ہیں, اس وقت آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں وومنس ڈے کے اوپر. ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی کامیاب خواتین کا ذکر یہاں کریں, ان کی ڈیزینیشن کے ساتھ ان کو یہاں پہ پروموٹ کریں. تو انہوں نے جسٹ یہ بول کے کرتے تھے لیکن یہ ہماری خواتین ہیں, ہم ان کی پکچرس کیسے لگائیں گے. لیکن ہم ایک اسلامک کنٹری میں ضرور ہیں, لیکن ہم اس پردے میں وہ خواتین جن کی میں بات کر رہی ہوں, ان کو کامیابی کی سراہنا ہے, اسی لیے آپ کو ضرورت ہے. لیکن آپ صرف یہ بول کے کہ ان کی پکچرس ہم نہیں لگا سکتے یا ان کو ہم پرموشن نہیں دے سکتے, تو غلط ہے. تو اس کو ہم کس طرح سالو کریں, اس کو ہم کیسے کریں؟ جی بے انتہا مثالیں ہیں اس کو ریزالو کرنے کی, اور سب سے بڑی مثال تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے کہا کہ خاندان کو اس وقت تک اسسٹنس نہیں ملے گی جب تک اس گھر کی خاتون کا شناختی کارڈ لے کر نہیں آؤ گی. آپ کو پتا ہے کتنے شناختی کارڈ بنے اس کے بعد عورتوں کی, ان کو کس طرح کی ویزیبلٹی ملی ہے. تو یہ تو مائنڈ سیٹ ہے جو ریاست کا تبدیل ہوگا, جسے ہم افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں, اور اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے. اس وقت بورڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ 30% عورتوں کو میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت مزید ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ آگے بڑھیں گے. Which has been followed by the students in this hall. I'm thankful to everyone who is being here and contributing. In the end, I would like to request Professor Dr. Nusrat Idris and Dr. Asma Manzoor to come forward and present sheets to the students. اچھا, آپ سوال کر لیں پھر اس کے بعد. I have one question. Our society, I have seen it, that the domestic violence is also going on, but we keep it as a disclosure. I'm a year second year student. Actually, I have seen it in our society.
Many of these women I have seen here in society, and they are suffering with the domestic violence, but they keep as a secret because some of the mother and some of the family members told them you should not disclose it. So what strategies we use for them? बेसिकली कभी कभी जो पेरेंट्स हैं किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाए तो वो इसको हाइड करना चाहते हैं, वो हाइड करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हाइड क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा। यू आर वेरी राइट, लाइक ऑल द स्पीकर्स सेड कि स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई इदारे इस पर काम कर रहे हैं और वो सीक्रेसी रखना चाहते हैं मगर अच्छा काम कर रहे हैं तो देयर इज़ नो हार्म इन इट, बिकॉज अगर फर्ज करें कि मेरे साथ कुछ होता है तो इट्स नॉट इजी फॉर अ वुमन टू कम आउट एंड से कि मेरे साथ ये हो गया। आप सारे लोग ही बोल रहे होंगे ना कि ये क्या आना ही नहीं चाहिए था, सामने क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो इसलिए बी पेशेंट, मसले हल होने चाहिए। और अभी जैसे हुमा साहिबा ने 2-3 दफ़ा कहा है कि माइंड सेट के चेंज होने की ज़रूरत है। बेटा कल जो एक बच्ची 3 दिन की मारी गई है तो आज हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या मैसेज मिलता है, मेरे बेटों को क्या मैसेज मिलता है कि आपने बेटी को मारना है। सो दिस माइंड सेट नीड्स टू चेंज एंड बी पेशेंट, वट एवर इज हैपनिंग बी पेशेंट। ये इधर लोग ऐसे नहीं आए बेटे, आज तो हम आपको इतनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना, किस बात से गुजर के आए हैं। वो महताब ने जैसे कहा कानकों वाला कहा, इट्स नॉट ईजी एंड यू गाइज डोंट थिंक द बिगेस्ट cherished thing is you are here. When we were in the schools, so many girls were not there. Yes, we want our boys here because उन्हीं को बता के तो चेंज होगा ना। कल जिस बच्चे ने मारा मैंने उसकी तस्वीर देखी, इतना खूबसूरत बच्चा है वो और यंग लड़का। Why did that? क्यों हमारी सोसाइटी इसको ये चेंज नहीं कर सकी कि वो ये बात करता है। इतनी प्यारी बेटियां जिनसे कलर होता है, यूनिवर्स का कलर है हम, why to kill them? So be patient and inshallah beta world is yours. Hence we need to create an environment that recognizes the differences and yet inclusive, creating safe space for people in general. We need to highlight women's role in peace process and increase women's participation at policy level. To create an equitable society, discrimination between men and women in all aspects of life needs to be addressed, especially awareness and implementation of laws requires political will and action. As all the speakers, we need research to explore the challenges faced by women using social media and provide awareness about organizations that provide support and counseling in such cases. Organizing art-based seminars exclusively for gender issues and encouraging students to participate, this will increase awareness and can contribute to the goal of gender equality. And the most important of all, we need a role model. Although there are many challenges for women, but with strong will and commitment, they have made and are still making progress in their field. Following the footsteps of great women leader of our time, Mohtarama Benazir Bhutto, it is important to aware young women about her legacy and other women leaders through seminars and conferences. With these recommendations, we conclude that it is important to recognize women's role in all domains without discrimination because gender equality and social justice is the key to sustainable development. Thank you. Thank you, Dr. Shagufta Nasreen. Now may I request Professor Dr. Nusrat Idris to present shields to the presenters and faculty members. I will call the names of the presenters, organizers and faculty members one by one. Please join us here on the stage and receive your shields. Because in her we see the way forward for each one of us. And it is not just about the First Women's Bank.
It is not about women police stations. It is not about lady health workers. It is not about also the polio drops or the fact that घर पर सेफ जचगी जिसमें औरतें पाकिस्तान में मरती हैं, इसके अलावा भी वो औरत बहुत कुछ मेरे और आपके लिए कर रही है. South Asia has the distinction of having women representation at the highest political level. यानी 80% जैसे हम कम हैं, लेकिन highest political level पे खवातीन की तादाद साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है. इंदिरा गांधी हैं, नायका हैं, हसीना हैं बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में ऑफ कोर्स बेनजीर भुट्टो हैं. तो साउथ एशिया को ये समझिए सूरत हाल मैसर है, बावजूद इसके कि पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं. तो जब फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ती हैं तो औरत कार्ड उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है, और जब बीवी इलेक्शन लड़ती है तो अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी यहाँ विलादत कब होगी, तभी इलेक्शन की डेट रखी जाए ताकि ये पूरी तौर पे उस पर पार्टिसिपेट ना कर सके. ये वो माशरा है जो उस औरत के साथ करता है जो ऊपर न आ जाए. Unfortunately, these appearances limit themselves to exceptional cases rather than reflect a comprehensive change in social norms. आज भी हम औरत को पोजीशन ऑफ पावर में देखने से घबराते हैं. We have the first acting women vice chancellor of Karachi University, the first ever, and that also happened through a legality. It didn't. अगर अभी भी बस चले तो हटा दें और किसी मर्द को बिठा दें, चाहे वो इसके काबिल हो या ना हो. आगे आ जाइए. Women politics in South Asia, pain and loss for these women went hand in hand with their future political aspirations. औरत को तो बगैर दर्द के कुछ नहीं मिलता. कोई मकाम किसी औरत को अगर बगैर दर्द के मिला हो तो मुझे खड़े होकर बताएं. To this extent, Benazir herself acknowledges female politics in the region within a dynastic context. ये उन्होंने खुद कहा. Other women on the subcontinent had picked up the political banners of their husbands, brothers and fathers before me. The legacy of political families passing down to the women had become a South Asian tradition. I just never thought it would happen to me. जब इतना दर्द मिला फिर खड़ा होना पड़ा. So heiress to a glorious clan, of course, legacy थी, political family थी. Monarchies aside, few families have altered or influenced the course of history in their countries. But this relation isn't unilateral. History and politics exert an equal, if not more powerful role in shaping the narratives of these families. तो बीवी की legacy है, शाहनवाज भुट्टो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, and her legacy lives on. आगे आ जाइए. So this is the family of politicians. This is Sir शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, और इस वक्त जो सड़क पे हैं आजकल बिलावल भुट्टो. Years later, Benazir would mention her great-grandfather's achievements as proud cornerstones that made the Bhutto clan precious for Pakistan. ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो साइड में लिखा है, उन्होंने उनसे कहा, remember whatever happens to you, you will ultimately return here. Your place is here. Your roots are here. The dust of mud and heart of Larkana are in your bones, and it is here that you will be buried. यही दफन होना है हम सबको. जो सोचते हैं कि बेहतरी बाहर है, दोबारा सोचें. And I think that's what made Benazir Bhutto who she is. और आज यही सवाल है कि कौन से लीडर्स हैं जिनकी जड़ें यहाँ हैं और कौन से लीडर्स हैं जिनकी शाखें कहीं और हैं. आगे बात बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं. How did she come into politics? What pushed her into politics? She had not wanted to be a politician. Her aspirations were to become a diplomat. She had won the society. She was the leader of the Society of Debates at Oxford, and that's what she wanted to be.
But she almost had a dynastic right to politics fueled by the death of her father, the nation's beloved leader. The killing of her father metamorphosed her from a daughter into a determined politician ready to challenge dictatorships. The first sentence of her autobiography is, "I didn't choose this life, it chose me," would serve as a testimony to her acknowledgement of destiny, having the final say in her life. ये सिर्फ बीवी की कहानी नहीं है, हम सबको जिंदगी एक चीज के लिए चुनती है और फिर जिस चीज के लिए भी चुनती है, जहाँ भी चुनती है, हम सुरखरू होते हैं. Over the course of her career, she would take on prime ministership twice, undergoing a series of house arrests, exiles, imprisonments, and multiple personal losses in the family. ये कीमत थी जो बीवी ने उठाई सियासत में होने की. The first defining moment of her adult life came in the shape of having to manage all the proceedings from her father's trials, attending to the family land along with preserving the party. In 1981, the second blow came in the shape of her own arrest. In her autobiography, Daughter of the East, she goes on to elaborate how difficult this period was and how her most ardent desire was nothing but to simply drink fresh water. जिस सेल में बीवी थी, उस सेल के ऊपर इतने रात भर इतना शोर मचाते थे कि जब वो बाहर निकली तो उनकी हियरिंग इम्पैक्ट हो गई. ये इसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हुआ था. In her autobiography, Benazir provides horrific details of her imprisonment, which are meant to break her body and her spirit. However, not only did she survive the inhuman treatment, but her resolve only grew stronger. These are her words, 1989. In multiple interviews, she goes on to acknowledge how her being the daughter of Zulfikar Ali Bhutto and a woman was a threat enough for then leadership. Bhutto की बेटी थी और औरत थी, यही गुनाह था. Her opposition never stopped fearing her as a potential game changer, a threat that could not only be averted with physical liquidation. In some ways, what Benazir later sculpted into her political party was a soul of a loyal opposition. आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी, आजकल की सोशल मीडिया का ज़माना है. हमारा एक बच्चा भी आज अभी सोशल मीडिया पे था. जब बीवी इलेक्शंस में थी तो बीवी की भी तस्वीरें और नुसरत भुट्टो उनकी वालदा की भी तस्वीरें पंजाब में हेलीकॉप्टर से सारे में गिराई गई थी और उनके हवाले से ऐसी बातें कही गई थी जो मैं इस महफिल में भी रिपीट नहीं करना चाहती. तो ये हम करते हैं अपनी ख़वातीन लीडर्स के साथ और फिर हम कहते हैं कि ये औरतों का दिन है. Greetings from New York, everyone. Assalamu alaikum. It's wonderful to be here, and I want to start by thanking Dr. Mansour for helping to organize this and for contacting me and inviting me to be involved. Dr. Anita Amber Malik for continuing this international educational collaboration for many years and for her work. I'd like to thank fellow speakers. It's an honor to be on this panel with all these speakers, with all these ideas and research, and also to the University of Karachi for hosting this very important conference on the International Day for Women. Discrimination and violence against women is not seen as a problem. Since the emergence of media technologies, a huge bulk of the literature has touched upon the usage and effects of social media, and social media influences users' psychological well-being positively and negatively in both ways. Definitely, everything has its pros and cons, advantages and disadvantages. Pakistan's Iron Lady Benazir Bhutto lives on, because in her we see the way forward for each one of us. And it is not just about the First Women's Bank.
It is not about women police stations. It is not about lady health workers. It is not about also the polio drops or the fact that گھر پر سیف زچگی جس میں عورتیں پاکستان میں مرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ عورت بہت کچھ میرے اور آپ کے لیے کر گئی. South Asia has the distinction of having women representation at the highest political level. یعنی 80% ویسے ہم کم ہیں لیکن highest political level پہ خواتین کی تعداد ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. اندرا گاندھی ہیں, بندر نائکا ہیں, حسینہ ہیں بنگلہ دیش میں, اور پاکستان میں آف کورس بے نظیر بھٹو ہیں. تو ساؤتھ ایشیا کو یہ